to be present here to witness a golden moment for our nation. INS Vikrant is a testimony to the passion and vision of our Navy veterans, a testimony to the relentless pursuit of excellence by our warship designers, a testimony to the years of dedication and shipbuilding expertise of Cochin Shipyard, and a crowning achievement of Indian industry and MSMEs. देवियों और सज्जनों, आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण के मार्ग पर चलते हुए भारतीय नौसेना ने आज एक नए मुकाम को हासिल किया है। भारत सरकार के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की नीतियों पर आधारित विकास की नींव अब फलीभूत होते दिखाई दे रही है। तो आइए भारतीय नौसेना के इस सफर को एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से देखें। The Prime Minister of India's vision of Make in India and Atmanirbhar Bharat has led to self-reliance on land, at sea and in the air. डिफेंस से जुड़ी हर छोटी छोटी जरूरत के लिए विदेशों पर निर्भरता हमारे देश के स्वाभिमान, हमारे आर्थिक नुकसान के साथ ही रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा गंभीर खतरा है। इस स्थिति से देश को बाहर निकालने के लिए 2014 के बाद हमने मिशन मोड पर काम शुरू किया। बीते दशकों की अप्रोच से सीखते हुए आज हम सबका प्रयास उसकी ताकत से नए डिफेंस इकोसिस्टम का विकास कर रहे हैं। The course towards Atmanirbharta has been charted by the Government of India's transformational initiatives. Positive indigenization lists promote indigenous development and design. Dedicated defense corridors boost defense production. Increase in FDI through the automatic route enhances access to modern technologies. The IDEX ecosystem supports advanced research and development. Every platform since 2014 has seen increased indigenization, creating greater opportunities for Indian industries both within and outside India. We are now a three-dimensional Atmanirbhar Navy capable of operating across the spectrum of naval operations, from disaster relief to all-out combat. Our transformation from a buyer's to a builder's navy has been inspired by a rich maritime legacy of indigenous design and construction. Today, there are 39 ships and submarines under construction in Indian shipyards. 49 more platforms have been accorded acceptance of necessity. Our future submarine program will be our largest Atmanirbhar project. Being vocal for local has led to innovation and skill development, contributing to Startup India. Atmanirbhar Bharat has not only created robust infrastructure, it has made us think bigger and bolder. What better proof than Vikrant? Named after our first carrier, the legendary Vikrant, that played a decisive role in 1971, she will be the fourth aircraft carrier to fly the White Ensign. Designed by the Indian Navy's Warship Design Bureau and built by Cochin Shipyard Limited, we now belong to a select group of countries with the capability of indigenously designing and building an aircraft carrier. Her 26,000 tons of warship-grade steel has been developed by DRDO and produced by the Steel Authority of India. Vikrant's 76% indigenous content has been achieved through partnerships
with over 90 Indian OEMs, more than 100 MSMEs, and over 500 ancillary industries. Above all, Vikrant has provided direct employment for 2,000 personnel in CSL and indirect employment for 13,000 towards plowback effect to the Indian economy. आपका लक्ष्य होना चाहिए कि भारत का जब अपनी आजादी के 100 वर्ष का पर्व मनाए, उस समय हमारी नौसेना एक अभूतपूर्व ऊंचाई पर हो. As India powers towards a blue economy, Vikrant will strengthen the Navy's capabilities and be a force multiplier in both defensive and offensive roles. 630, engage. To declare and proclaim the commissioning warrant of INS Vikrant. कमिश्निंग आदेश. जबकि भारत सरकार ने भारतीय नौसेना पोत विक्रांत को कमीशन करने का निर्णय लिया है, आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप आगे बढ़ के इस युद्ध पोत को सितंबर 2022 के दूसरे दिन पर कमीशन करें अथवा परिस्थिति अनुसार शीघ्र कमीशन करें. भारतीय नौसेना पोत विक्रांत को ध्वज अधिकारी दक्षिण नौसेना कमान के द्वारा प्रशासित किया जाएगा. मेरे द्वारा जारित 2 सितंबर 2022. हस्ताक्षर आर हरिकुमार, एडमिरल, नौसेना अध्यक्ष. ये विश्व को सशक्त भारत की ज्यादा जरूरत है. मैंने एक बार पढ़ा था कि एक बार जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से किसी ने पूछा कि आपका व्यक्तित्व तो बड़ा शांति प्रिय है, आप तो बड़े शांत व्यक्ति लगते हैं, तो आपको हथियारों की क्या जरूरत लगती है? कलाम साहब ने कहा था, शक्ति और शांति एक दूसरे के लिए जरूरी है. और इसलिए आज भारत बल और बदलाव दोनों को एक साथ लेकर चल रहा है. मुझे विश्वास है, सशक्त भारत शांत और सुरक्षित विश्व का मार्ग प्रशस्त करेगा. इसी भाव के साथ हमारे बहादुर जवानों को, वीर सेनानियों को आदरपूर्वक उनका गर्व करते हुए आज के इस महत्वपूर्ण अवसर को उनकी वीरता को समर्पित करते हुए आप सबका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं. जय हिंद. देवियों और सज्जनों, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की भव्य उपस्थिति में एक बुलंद आवाज में मेरे साथ 3 जय पुकारेंगे. आईएनएस विक्रांत की, भारतीय नौसेना की, भारत माता की. Pay attention, all positions. 5 minutes to Nishan. Ladies and gentlemen, as you can see, the Honorable Prime Minister, along with the dignitaries, is now proceeding to the flight deck of INS Vikrant for the Nishan ceremony, where the new naval ensign will be hoisted on INS Vikrant.
A ceremonial guard is positioned there, and we shall shortly move to the commentator's desk on board the Vikrant. I would also like to remind our distinguished guests here that once the guard commander orders national salute, the national anthem would be played. Ladies and gentlemen, when the national anthem is played, all of you are requested to rise at your positions. Our guests here this morning would be delighted to know that the live broadcast of this ceremony is being broadcast on Doordarshan, our national television. And not only is the broadcast going all over India, but also all across the world over satellite television and the internet. Big thanks to the crew from Doordarshan. As we mentioned earlier in the afternoon, in the morning, after the national anthem, we will be having a fly past. In fact, two of them. Due to prevailing weather conditions, we are all seated here, so we may not be able to have a close look at the flight past, but I'm quite certain that we are going to feel and hear the fly past. तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर, जिसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं इस पूरी कमीशन सेरेमनी में, और अब यहां पर निशान समारोह देखने को मिलेगा। और प्रधानमंत्री इस वक्त फ्लाइंग डेक के ऊपर तमाम वरिष्ठ लोगों के साथ में, और ये भव्यता विशालता दर्शाता है किस प्रकार से देश ने आज रक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा दिन हासिल किया है। Sound control. Flight deck of INS Vikrant commissioning will be marked by hoisting the tricolor on the flag staff at the ski jump and the simultaneous hosting of the naval ensign on the ensign staff at the aft or the rear of the ship. Vikrant Vishesh hai, Vikrant Vishisht hai. Vikrant is special, Vikrant is superior. In the words of Honorable Prime Minister, INS Vikrant symbolizes Atmanirbhar Bharat. और ये तस्वीरें अब निशान समारोह की तैयारियां, कलर सेरेमनी जिसको कहा जाता है, और अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि हर नौसैनिक युद्धपोत पर दो ध्वज होते हैं, और अग्रिम भाग में राष्ट्र ध्वज एवं पिछले भाग में नौसेना का निशान होता है। वो नौसेना का निशान जो आज नए रूप में, नए स्वरूप में, भारतीय रूप में आज नौसेना को मिला है। The color guard will be giving salute to the Prime Minister. The color guard giving salute to the flag, the naval band playing the national anthem in some time during the hosting of the tricolor and the ensign. Please rise for the national anthem. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।
पूरे सम्मान के साथ हमने देखा किस प्रकार से राष्ट्रगान के साथ में यहाँ पर निशान सेरेमनी हुई और जो नेवी का ध्वज है वो लहराता नजर आ रहा है इस वक्त INS विक्रांत पर। और ये नया ध्वज है जिसमें आज नया निशान देखने को मिल रहा है और औपनिवेशिक काल जिसमें गुलामी की मानसिकता झलकती थी उससे आगे बढ़ते हुए आज भारतीयता का नया उत्कर्ष देखने को मिला। और ये फ्लाई पास्ट की शुरुआत होती हुई दिखाई पड़ रही है। यहाँ पे हम साफ तौर पे देख सकते हैं ये तमाम जो विमान हैं जो इस वक्त आपको दिखाई पड़ रहे हैं। Spectacular display of naval's air prowess. Three Chetaks ऊपर आकाश में देखिए राष्ट्रीय ध्वज एवं नेवल एनसाइन का गर्व से फहराते हुए three advanced light हेलीकॉप्टर पहला हवाई led by Commander B. Madhukiran कर रहे हैं and कमांडर Chetak ईशान महापात्रा led by Commander Ishan Mahapatra. बिल्कुल ये तस्वीरें अपने आप में दिखाती हैं किस प्रकार से ये फ्लाई पास्ट जहां पर 3 चेतक हवाई जहाज इसके अलावा 3 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर साथ ही साथ यहाँ पर सीइंग 42 ब्रेवो हेलीकॉप्टर और इन तमाम की गड़गड़ाहट साफ तौर पर प्रधानमंत्री इसको निहारते हुए और ये भारत की इस भव्यता को आसमान में अपनी नजरें गड़ाए रखिएगा। सेना का निशान ध्वज के साथ में राष्ट्रध्वज इनके साथ में ये गड़गड़ाहट बताती है कि भारत की रक्षा क्षमताएं किस हद तक बढ़ गई हैं और आत्मनिर्भर भारत ये आज दुनिया को बताने में सक्षम है कि हम कैसे दुनिया में आगे अग्रणी भूमिका निभाने को तत्पर है। Prime Minister waving at the rotary wings as 3 Chetaks and 3 advanced light helicopters as well as Bravo 42B led by Commander Harpreet Singh Baweja displaying naval's air prowess. Seeking इनके ठीक पीछे है 42B प्रतिरोधी और seeking 42 Bravo कमांडर हरप्रीत सिंह बवेजा की अगुवाई में सीकिंग 42 ब्रावो हेलीकॉप्टर कमांडर हरप्रीत सिंह बवेजा के नेतृत्व में ये तमाम फ्लाई पास्ट नजर आ रहा है। और हमने देखा किस प्रकार से 3 चेतक इसके अलावा 3 एडवांस हाई हेलीकॉप्टर साथ ही साथ सीकिंग 42 ब्रेवो हेलीकॉप्टर ये नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री एक तरीके से हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए गड़गड़ाहट बताती है हमारी बढ़ती हुई रक्षा क्षमताओं की। आत्मनिर्भर होते रक्षा के क्षेत्र में भारत की और आज का दिन बेहद ऐतिहासिक। Absolutely. And INS Vikrant now would be capable of operating an air wing consisting of at least 30 aircraft, which will be comprising of MiG-29K fighter jets, amongst others. And remember why this is special. Indigenously manufactured advanced light helicopters that you just saw a while back on your screens, and also some light combat aircraft from Indian Navy will be positioned. बिल्कुल अपने आप में बेहद खास क्योंकि विक्रांत INS विक्रांत बहुत खास है और अब एक तरीके से देखा जाए आज ये भारत के लिए रक्षा के क्षेत्र में बेहद महत्वपूर्ण। और इस विक्रांत INS विक्रांत की बात की जाए तो अब ये नौसेना को समर्पित होने जा रहा है और ये जोरदार तालियों के साथ आइए स्वागत करते हैं भारतीय नौसेना में INS विक्रांत को एक तरीके से नौसेना को समर्पित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री हमको यहाँ नजर आ रहे हैं। Ship's plaque being unveiled by Honorable Prime Minister in the presence of Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh. This is going to be soon followed by the presentation of memento in a while. We also saw a while back Prime Minister, presentation of memento by Chief of Naval Staff to Honorable Prime Minister of India. नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार अब माननीय प्रधानमंत्री जी को INS विक्रांत का एक प्रतिरूप प्रस्तुत करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री अब कमान अधिकारी कैप्टन विद्याधर हरके को रजत ताले का हस्तांतरित करेंगे।
मुख्य अतिथि सभी गणमान्यों के साथ छाया चित्रण के लिए स्की जंप की तरफ बढ़ रहे हैं। आकाश को अपनी गूंज से अलंकृत कर रहे अब आ रहे हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित डॉर्नियर विमान, जिनका नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन अर्जुन मेनन। अब आ रहा है सैन्य सर्वेक्षण में सबसे कुशल अत्याधुनिक पनडुब्बी प्रतिरोधी उपकरणों से लैस P-8I विमान, जिसके चालक हैं कमांडर कुलदीप मेहता from Hindustan Aeronautics Limited, led by Captain Arjun Menon. P-81, P-8I, one P-8I on your screens, maneuvering, followed by Tree Hawks, led by Commander Shailesh Singh Rana. और अब बारी है प्रशिक्षण के लिए उपयोग में लाए जाने वाले हॉक लड़ाकू विमानों की। इस दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं कमांडर शैलेश सिंह राणा। और अंत में ध्वनि की दुगनी गति से उड़ने में सक्षम आसमान को चीरते आ रहा है MiG-29 के लड़ाकू विमानों का यह दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन SS सांब्याल।